Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to do AFCAT PYQs and this is the fifth session of this series. आज हम कुछ mixed questions की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास हमें AFCAT का पैटर्न पता है सबसे पहले तो कि it is a mixture of synonyms, antonyms, fill in the blanks, spotting errors, idioms and phrases. और बहुत सारी कई बार नई नई चीजें हैं जो एड अप होती रहती है, राइट? वो क्या नई चीजें हैं, जैसे कई बार चूज द करेक्ट स्पेलिंग आ जाता है, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड आ जाता है. ऐसी बहुत सारी निकनैक्स हैं जो हर बार एक नई एडिशन रहती है एग्जाम में. तो इस बार हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे पास है एंड what and how to approach them basically. Okay, so let's quickly begin. The first question that we have is from vocabulary. Again, this is, you have to tell the synonym of the word transgressor. Okay, see, now we have four options here: passenger, lawbreaker, protector and comrade. So they are not at all related with each other, इसलिए आप इसमें ना एलिमिनेट कर सकते हो और कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकते. इधर इस केस में यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. अदरवाइज आई डू नॉट थिंक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू मीनिंग, सिंपली बिकॉज चारों में से कोई भी ऑप्शन आपस में रिलेटेड नहीं है, तो आप इसमें एलिमिनेशन या इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक्स निकालिए, उसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी लिखिए, जो जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए और उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि योर लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी एक्सपैंड्स. ओके, सो दिस वर्ड ट्रांसग्रेसर मींस लॉ ब्रेकर, one who breaks the law. Okay, so the answer here would be beta. So this is a very important word and I think you should know. Transgressor means a lawbreaker. Now we have this word egregious. Okay, there is one word called gregarious and the other one is egregious. Gregarious का मतलब तो देखो आपको पता होना चाहिए, इससे याद रखो, जो ग्रुप में रहना पसंद करे. Okay, gregarious is sociable, one who likes to be in groups or basically who like to be together, people or animals, even like cattle जिसको हम बोलते हैं, they are gregarious. Why? Because they are always in a group, right? Similarly, people who always like to be amongst others are gregarious. But egregious का मतलब होता है something which is very disgusting. इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, but ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बिकॉज इनका जो लेटर्स है वो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है. सो atrocious is the correct answer. The answer is D. Egregious is disgusting. Okay. Next up we have predilection. We have to give the antonym of the word. Okay. देखो, defeat होता है हार, aversion होता है किसी चीज से hatred, oblivion होता है like knowing, and objectivity I guess you know. प्रेडिलेक्शन होता है प्रेफरेंस, किसी चीज की तरफ आपका प्रेफरेंस प्लस इंक्लिनेशन. सो इट मीन्स बेसिकली लाइकिंग समथिंग. ही हैज अ प्रेडिलेक्शन फॉर spicy food. Okay, it means a preference for that. Now, in this case, you have to tell the opposite. So, if somebody likes something, then what will be the opposite? It will be aversion, which means hate. Aversion को हम और क्या क्या बोलते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है. अवर्जन के लिए सबसे पहला सिनोनिम जो होगा वो है डिस्पाइस. ओके, देन यू हैव लोथ, देन यू हैव abhor. All these words they stand for hate. Okay, so predilection का उल्टा will be aversion and predilection is preference plus inclination. Okay, this is how you can actually remember this word. Correct. Moving on, we have cacophonous. See, whatever, wherever you find this root word, no, phony, phone, phonetics, it means sound. कहीं भी ये आए, right? So cacophony is basically a lot of noise, disturbing, commotion वाला sound. Okay, इसको ऐसे याद रखिए, commotion वाला sound. Commotion is disturbance. अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसका उल्टा. Tamed क्या होता है? Domesticated. उल्टा हमारे पास क्या होगा? Harmonious. Cacophonous is loud and disturbing.
So ulta will be harmonious, right? This one also was pretty easy. Why? Because tamed, domestic, and silent, they somehow mean the same thing. Next, we have calumny. And what does it mean? Does it mean apology? You have to tell the opposite first, but let's see what is the meaning. Okay, if you look at the options apology, eulogy, enjoyment, reservation, again, they are not at all related or associated with each other. So, we have to actually know the meaning of this, right? Calumny is basically also called slander. किसी को criticize करने के लिए कोई कहा जाए अगर कोई चीज, that is the meaning of this word. Okay, now if you look at the other options, you do not feel कि इसका कोई भी लेना देना है, but there is one word which is eulogy. Eulogy is any poetry or any literary work that is written in the praise of someone. किसी की तारीफ में अगर कोई word, अगर कोई poem लिखी जाए, कोई story लिखी जाए, that is called eulogy. Okay, elegy होता है which is written in grief or mourning. अगर कोई ट्रेजेडी के लिए आप कोई पोइट्री लिख रहे हो, कुछ भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एलिजी. इफ यू राइटिंग इट टू praise someone in admiration of someone, then it is eulogy. Okay, and what is calumny? It is basically slander. किसी को criticize करने के लिए अगर आप कुछ लिख रहे हो, that is the meaning of this word, right? So these are the two opposites to each other. One, moving on, we have able to use both hands alike. See, some people are right-handed, some people are left-handed. There are people who can use both their hands uh, easily. So what are such people called? देखिए, dexterous word का मतलब होता है skilled. Okay, ambi root word का मतलब ही होता है double. जैसे ambivert, introvert, extrovert, ambivert. Okay, ambivert होता है double. Now ambidextrous is who is doubly skilled, so who can use both his hands together at the same time. So somebody who can use both his hands is known as ambidextrous. Dexterous, skilled, expert, they all three mean the same thing, right? So this one was pretty easy, and I think you have done this word now thousands of times now, ambidextrous, because it is very repetitive in nature. Next, we have a written account of the life of an individual. See, now there is a difference between a biography and an autobiography. What is the difference? If a question is being asked in this form, देखिए one word substitution इस बार नया है इसमें, कि अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ के जो भी रिटन रिकॉर्ड है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोग्राफी. If the question says the written record of an individual's life written by himself, अगर खुद उसने वो लिखी है, then that is an autobiography. So this is the difference. Auto का मतलब होता है self, right? हमें यहाँ सिर्फ क्या पूछा है? A written account, a written record. So answer of this would be biography. अगर यहाँ पे लिखा होता written by himself, published by himself, then the answer would be autobiography, right? This is the major, like the little difference between these two. क्योंकि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. यू शुड रिमेम्बर दिस रूट वर्ड एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स. अब आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? प्रिस्क्रिप्शन तो पर्ची होती है ना? बायोप्सी का कोई लेना देना नहीं है, प्रोग्नोसिस का कोई लेना देना नहीं है. डॉक्टर बोलता है मुझे आपका डायग्नोसिस करना पड़ेगा. ओके, when he does the diagnosis, when he looks at whatever thing you have explained or whatever your problem looks like, then the doctor kind of understands कि अच्छा ये problem हो सकती है, looking at the symptoms. So that entire process is called diagnosis. The answer is C. This is the easiest of the lot, I think. Answer would be C. Correct. Prolonged inability to sleep. Is it called amnesia? Is it called utopia? Is it called nausea? Or is it called insomnia? This is, I think, a very easy question again. Utopia होता है एक imaginary world where everything is perfect, okay, where there is no fighting, where everybody is happy, where there is complete law and order. So utopian system is very imaginary. It is very ideal and very perfect. Okay. Nausea is when you don't feel good, when you feel like vomiting or throwing up. That's called feeling nauseous.
insomnia, देखिए somna, this root word means sleep, and insomnia means lack of sleep. So if somebody has that inability to sleep, that is called insomnia, and a person who cannot sleep is known as insomniac. Okay, so this one again very easy, but you should remember. A style in which a writer makes a display of his knowledge. उसको क्या बोलते हैं? Is it called verbose? Verbose is using a lot of words. Pedantic, ornate और pompous. Pompous का मतलब भी क्या होता है? Very grand. Okay, on a large scale. Ornate is also the same. The word is pedantic. ये बहुत literal word है, ये आपको पता होना चाहिए. Otherwise, if a question comes like that and you have no clue about it, just skip it. Okay? इससे मतलब आप उसको नेगेटिव करो, उससे बेटर है कि आप छोड़ ही दो क्वेश्चन, राइट? द स्कूल एल्यूमनाई गैदरिंग पुट अस इन अ डैश मूड. आपको बताना है कि स्पेलिंग क्या होगा. रिमिनिसेंट का स्पेलिंग, रिमिनिसाइज करना, किसी चीज को याद करना. सो व्हाट विल बी द स्पेलिंग ऑफ रिमिनिसेंट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेमिनिसेंट बन रहा है, ये रेमिनिसेंट बन रहा है, एसईएनटी नहीं आएगा. ये हमारा आंसर क्या है? C. इसीलिए बहुत जरूरी है वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. कई बार हम सिर्फ वर्ड को मीनिंग और ऑपोजिट समझने में यूज करते हैं. वी डोंट एक्चुअली delve into the fact that what is the correct pronunciation of this word. Then if certain type of questions, when they come in front of you, then you get puzzled. Why? Because you don't know how to pronounce it, and that also is a lot of that adds to the difficulty of a lot of students. So try to understand how to pronounce the word as well. गॉड इज डेड इज अ डैश स्टेटमेंट. ब्लास्फेमस का मीनिंग क्या है? पहले तो ये डिसाइड करते हैं. ब्लास्फेमी होता है द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अ रिलीजन और सेइंग बैड थिंग्स अबाउट समबडीज रिलीजन और फेथ. किसी के रिलीजन या फेथ को अगर आप गलत बोल रहे हो, बुरा कह रहे हो, तो दैट इज ब्लास्फेमी. ओके, एंड सच एक्ट्स आर नोन एज ब्लास्फेमस एक्ट. अब ब्लास्फेमस का स्पेलिंग क्या होता है? यू हैव टू फिगर दैट आउट. Okay, so it's not blasphemous, so that's D is obviously out of context. ये भी गलत है. blasphemous भी नहीं होता. हमारे पास क्या है? ये. So common vocabulary can sometimes come in such sort of questions as well, right? The answer would be C. Next, the threat of an epidemic caused great alarm and dash. सबसे पहले तो trepid होता है, like being scared. So what will be the answer here? ट्रेपिडेशन, टर्पिडेशन, ट्रेपिडेशन या ट्रिपिडेशन, ये तो देख के गलत लग रहा है. ठीक है, हमारा आंसर क्या है? ट्रेपिडेशन. इज दैट राइट? सो दिस इज द परफेक्ट आंसर. लाइक बेसिकली बीइंग anxious. The din caused by the children howling is enough to dash the dead. Resurrect. Resurrect होता है. Resurrection is used for people when they have died and when they like come back to life again. ठीक है, तो resurrection का spelling क्या होगा? हरी up. Yeah. So the answer is RUSERRECT, resurrect. Clear? Can you dash the car into that parking spot maneuver? सारे स्पेलिंग गलत हैं. देखो ये मैन्योर, मैनेवर, ये सब देख के ही समझ आ रहा है कि दे ऑल आर रॉन्ग. ओके, समथिंग इज इनकम्प्लीट. द करेक्ट इज सी, मैन्योवर. You have to tell me the meaning of maneuver of this word in the comment section below. Hurry up. Let's see how many of you actually know it. Then you have close test. Okay, I have summed it up like this. So let's see if we can understand the meaning of this close test, the paragraph, and find out our answers. Okay, this is the last bit of this session. Those living in the slums are dash and tough because they are totally dash to the vagaries and hardships of life. Okay, let's give it a full read first, then we'll go with the options. The rising sun dashes the day and the setting sun closes the day for them. It is like a drama
where the curtain dash up in the morning and comes down in the evening. They don't dash hypertension and heart attacks because there is, after all, dash to worry about. ये हमने पढ़ा इसलिए पहले ताकि we can make sure and we can like be relieved with the fact कि इसमें कोई repetition नहीं है. अगर कोई repetition है तो फिर हमें options eliminate करने या निकालने बहुत ज़्यादा easy हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए, those living in the slums are dash. They are poor, sick, hardy और weak. So यहाँ पे weak वगैरह इस सब का कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? Okay, poor and tough. Because they are totally dashed to the vagaries and hardships of life. They are dependent to, they are independent to, exposed to or tried to. They are exposed to the hardships of life. ठीक है, उनको बहुत जल्दी मिल जाती है लाइफ की hardships and difficulties. The rising sun dash the day. The rising sun heralds the day. Herald तो आएगा नहीं क्योंकि rising sun singular है, ये तो गलत है. ब्रिंग भी नहीं आएगा. ब्रिंग्स द डे या हेरल्ड्स द डे? हेरल्ड्स का मतलब होता है टू कॉल समवन, सो हेरल्ड्स. ओके, इनिशिएट्स. इट्स लाइक अ ड्रामा वेयर द कर्टन डैश अप इन द मॉर्निंग. हैंग्स अप, हैंड अप तो नहीं आएगा. गोज अप इन द मॉर्निंग, शाइन्स अप. ऑफ कोर्स द आंसर इज गोज अप. ड्रामा में कैसे होता है? कर्टन राइजेस, द कर्टन गोज अप, एंड जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो द कर्टन क्लोजेस, राइट? सो उसी का है. दे डोंट डैश हाइपरटेंशन हार्ट अटैक्स. दे डोंट नो हाइपरटेंशन, दे डोंट गेट, they don't have hypertension or they don't think. Of course, thinking और knowing का तो कोई लेना देना नहीं है. Hypertension और heart attacks आपको you get them or you have them. They don't have hypertension, heart attacks. Okay. After all, why does it happen? Because after all, there is nothing to worry about. कुछ भी नहीं है. So the answer is D. Okay. So this was our paper of AFCAT. It was a previous year question paper. I really hope that you learned something, you learned certain words, and whatever meanings I've asked you in the middle of the session, please let me know in the comment section below. With this, thank you so much for joining, and I'm going to see you tomorrow with a next video, with the next session. And till then, take care and Jai Hind.